This is our practical list. Can you see this screen? Okay. So this is the 5th program that we are going to cover today. I hope आप लोगों का this 3rd program जो है ये cover हो गया हो. Okay? I mean cover तो हो गया है, but you have completed this program. Now in this 5th practical, write a program using following system calls. So fork system call, exe, get PID, exit, wait, stat, open dir, read dir. There are these system calls which we have to perform today. So A is write a program to execute fork system call and get the process ID using get PID. Okay. Then there is second fork system call execl, get PID, exit and wait use करना है. Okay, in this and stat system call का एक program. So today we are going to study about 4 major system calls. Okay. So can you see this fork system call PDF? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Now please tell me what is fork. Theory के टाइम पे थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दिया था आप लोगों को. So please tell me, Poojan, what is fork? Those who are actively listening, please raise your hands. I'm not clearly having idea about that. एक मिनट. हाँ बोलो. Not like clearly having idea about that. Fork क्या? Not clearly having idea. आइडिया नहीं दे रहा मुझे तुमसे. Okay, only 2 people are listening actively. 3, 4, 5, 6. भाई एक दूसरे का हाथ देख के तो खड़ा नहीं कर देते ना. बोलो मैम. Okay. 138 Asia. 138. Yes, ma'am. Do you know why you have raised your hand? Yes, ma'am. Why? You asked what is the fork? I asked who are listening actively, raise your hand. ऐसा मैंने पूछा है. Okay. Okay, what about others? Tokir, Dhwani. So 30%, 50% people are listening actively. Tokir. Okay, are you listening what I am saying? क्या बोला मैंने अभी? क्या पूछा? बोलो.
Okay. Dhwani. So you are not listening Tawqir actively? तो आपने हाथ क्यों खड़ा नहीं किया? Okay, Dhwani. 135. Then 136. 142. यस मैम, मैंने रेस करके डाउन कर दिया था हैंड। अब मैं बोलूं तब तक डाउन मत करो। आयुष। ओके मैम। Yes, ma'am. 172. Are you listening or not? Are you listening to the lecture? Dhwani. Dhwani. (135), 172 and 175. Okay. Okay, so you can please put down your hands. Now we are going to study fork system call first. So what is fork system call? Who will tell me? In theory, we have I have given you a little bit idea about fork system call. Who will tell me? Yes. Yes, out of these many people, these many students, for what fork system call is used? New process creation. Yes. Fork system call is used for creating a new process which is called as a child process. So suppose there is a process P1, it will call this fork system call and it can create a new process, suppose C1. That new process will be its sub process, or it can also be called as child process. After a new child process is created, both processes will execute the next instruction following the fork system call. Okay, यानी कि जब fork system call parent call करेगा, उसके बाद both parent and child will execute all the instructions followed by fork system call. Why? Because child process is also running and parent process is also running, and as I said, child shares the same code and resources as of parent. Child process uses the same program counter, same CPU registers and same open files which is used in the parent process. It takes no parameters and returns an integer value. Below are the different values written by fork system call. So अगर negative value return होती है by this function, if this function fork system call क्या है? It is nothing but a function. But these are such kind of functions जिनको run करने के लिए we need the permission of kernel. Okay.
We call such functions as system calls. Okay. Now, whenever we are calling this function and if it is returning a negative value, means that child is not created successfully. Creation of child was unsuccessful. And if it returns 0, then the child has created successfully. And if it is returning the positive value, then this positive value is the value of the process ID of the newly created process. Okay. Now, आपको प्रोग्राम से क्लियर होगा. So these three values can be returned. Either 0 can be returned, or negative can be returned, or positive value can be returned. Okay. Now predict the output of the following program. So these are some libraries which we have included. तो ये एक C program है, you know, for which stdio.h we use, and then uni std में we have these fork and all these system calls which we are using now. Now after including these libraries, हमने क्या किया यहाँ पे, make two processes which run same program after this instruction. तो हमने क्या किया, यहाँ एक fork system call को call किया. So here you can say this is nothing but a function. किसी भी फंक्शन के आगे या वर्ड के आगे इस तरह का ब्रैकेट आए, इट मींस दैट इज अ फंक्शन. आप लोगों ने C, C++ में भी पढ़ाई होगा. So this is nothing but a function, but it is called as system call because to execute this function we need the permission from kernel. Now हमने यहाँ पे ये system call किया, यानी कि इस फंक्शन को कॉल किया है. So this will create a child process. ठीक है, suppose C1. Now after this function, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, after fork system call, both child and process will execute the next instruction. So both parent and child process will execute hello world. ठीक है. So here you can see the output of this program is, okay, output is hello world 2 times. Okay, so this can be the child statement and this can be the parent statement. Okay, or this can be the parent statement and this can be the child statement. ठीक है. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि हेलो वर्ल्ड, जो फर्स्ट हेलो वर्ल्ड है वो पेरेंट का भी हो सकता है और चाइल्ड का भी हो सकता है, या जो सेकंड है वो पेरेंट का भी हो सकता है या चाइल्ड का भी हो सकता है. Why I am saying like दोनों से रन होते हैं, इसलिए कॉन्करेंटली रन होते हैं. एंड वी डोंट नो कि शेड्यूलर जो है, ओके, वो किस प्रोसेस को, पेरेंट को या चाइल्ड को पहले शेड्यूल करेगा ऑन सीपीयू. Okay, we don't know if it schedules the child process first on CPU, then child will execute first. Child will execute this instruction first, and if it schedules parent on CPU first, then parent will execute this instruction first. Okay, so now why I am saying that the instruction followed by fork will be run by both child and parent. Why? Because the child process is nothing but a replica of parent process. So if we consider this as a parent program, okay, so जो नया child process create हुआ है C1, that child process shares the same code as that of parent. So that's why it will run this statement. Child process will also run this statement because it is sharing the same code. Okay. Getting clear हुआ? Why that single instruction will be run by both child and parent? Because both child and parent, child is replica of parent, the child program also has the similar kind of code. Okay, child program में भी ये same program लिखा हुआ, the child is also having
the same kind of code written. Now suppose this is parent process P1 and this is the child process which is created by fork system call. Now child also has the same code because it is replica of parent. Now if scheduler schedules this process P1 first, then this process will execute this hello world statement. If scheduler and then this child process will execute this statement. Suppose here the hello world is written. Okay, so now child process will execute. Now suppose if scheduler schedules this child process first, so child का hello world पहले print होगा and then parent का hello world second print होगा. Both will run, but पहले कौन सा run करेगा we don't know about it. ठीक है, it depends on operating system कि वो किसको पहले schedule करता है, right? अब suppose this is the program, I have its word copy. Now copy this. Now let us try to execute it. So JS Linux पे okay, Hello, ma'am. yes. So this method just creates a copy of itself. मुझे आपका कट रहा है आवाज, क्या बोल रहा? This fork method creates a copy of itself. Can we say that? Yes. So the parent creates the copy of itself. ठीक है? Okay, ma'am. And then we can separately program for child process also. Okay, separately we can program it. But at first the child is the copy of parent. Okay. Now this is open. So suppose I am creating a file hello.c. Okay. So हमने अभी तक क्या किया था? hello.sh करते थे because हम shell script पे work कर रहे, shell scripting language we were using. Now we want to write a program in C language. तो मैंने insert press किया. अब यहाँ कमांड्स कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए आ रहे हैं, हाउ यू कैन कंपाइल द कोड एंड ऑल. तो वो तो ठीक है. आई एम डिलीटिंग ऑल दिस बिकॉज आई हैव कॉपीड, आई जस्ट हैव टू पेस्ट. नाउ मैंने ये जो कमेंट्स है एज इट इज रहने दिए. आई विल कॉपी दिस होल प्रोग्राम हियर, escape:wq, enter. Okay, now in C language or C++, we compile the code and then run it. So what is the command to compile the code? This is the command to compile the code. So gcc -o for output. Okay, then name of the file, space name of the file .c. So if it is compiled successfully, so no error will be returned. Okay? So it is compiled successfully. Now to run it, we have to use ./name of the file. So here you can see hello world is printed 2 times. Okay, 1, 2. Okay, वो इस तरह से दे रहा है, but this is actually 2 times hello world is printed. Okay, now second program, let us see second program. Calculate the number of times hello is printed. So now this is a program. इसमें एक बार यहाँ पे ये fork system call हुआ, then second time it is called, then third time it is called. Okay, and then printf hello लिखा है यहाँ पे, return 0. So okay, output आप लोगों को दिख ही रहा है. Just guess why 8 times it is writing or printing hello. Why 8 times it is printing hello? We have called fork system call 3 times, 1, 2 and 3. We have called it 3 times. Then why it is printing 8 times? Can any one of you guess? Ma'am, because the uppermost fork will again fork all the calls. So first fork जब कॉल होगा तो उसके नीचे वाले fork भी मतलब दूसरी बार कॉल होंगे, ऐसे मतलब
8 बार हो जाएगा टोटल। राइट, ओके। ये गेट का क्वेश्चन था। लेट अस सी द नंबर ऑफ टाइम्स हेलो प्रिंटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्रिएटेड। जितने प्रोसेस क्रिएट होंगे उतने टाइम्स क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा। फॉर ये स्टेटमेंट देख के हमें लग रहा है कि भाई 3 बार फॉर कॉल हुआ है तो 3 प्रोसेस क्रिएट होंगे, बट ऐसा नहीं है। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस विल बी 2 की पावर n। दिस इज एक्चुअली पावर 2 की पावर n। ओके, सो इफ there are n times this fork system call is called, so n is 3 and 2 की power 3 is 8। okay, तो यहाँ पे 3 बार कॉल हुआ है, so 2 की power 3 is 8, so 8 number of processes। how, कैसे, let us see। भाई क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? so now see there are 3 lines for fork system call। now in line 1, ठीक है, at this line when we are calling the fork system call, one child will be created। okay, there will be one child process, so C1 एक child create हुआ, okay, through this line 1। now this line 2, अब ये line 2 जो है वहां पे 2 child processes create होंगे। भाई क्यों 2 child processes क्यों create होंगे? and then फिर वो बोल रहा है कि line 3 से 4 child processes will be created। भाई क्यों? so line 1 में 1 child process L1, line 2 में 2 child processes and line 3 के थ्रू 4 child processes create होंगे। तो टोटल क्या हुआ ये 4, 5, 6, 7 प्लस 1 मेन प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस, तो टोटल 8 हो गए प्रोसेसेस, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जिसमें चाइल्ड प्रोसेसेस तो 7 ही है प्लस 1 मेन प्रोसेस यानी कि पेरेंट प्रोसेस, एंड सो टोटल 8 प्रोसेस। चलो अब ये बोल रहा है लाइन 1 एक प्रोसेस क्रिएट करेगा, लाइन 2 2 प्रोसेसेस क्रिएट करेगा एंड लाइन 3 4 प्रोसेसेस क्रिएट करेगा। हाउ कम? लेट अस सी। so there are total 8 processes, new child processes plus 1 original process। if we want to represent the relationship between process as a hierarchy, so let us now see। so the main process is P0, so ये main process है। first time when the fork is called, okay, this process P1 is created, this is the child process, so this P1 is created when first time the system call is fork is called। first time जब कॉल हुआ तो एक चाइल्ड क्रिएट हुआ। ओके, नाउ सेकेंड टाइम जब फॉर्क कॉल हुआ, राइट, तो सेकेंड टाइम दिस चाइल्ड विल आल्सो रन, दिस पेरेंट विल आल्सो रन। ओके, सो जब सेकेंड टाइम फॉर्क सिस्टम कॉल हुआ तो उस टाइम पे दिस प्रोसेस P2 is created as a child of P0 and this process P3 is created as a child of P1। right, now when third time this fork is called, जब third time fork call हुआ उस time पे this P0 will also run, this P1 is will also run, this P3 will also run and this P2 will also run। so when this P0 will run, so एक और उसका child create होगा, right, then P1 will run, so उसका एक और child create होगा, then P2 will run, तो उसका P5 child create होगा, and when P3 will run, तो उसका एक child P7 create होगा। ओके, ये तो therefore यहाँ पे 7 चिल्ड्रन इस तरीके से क्रिएट होंगे। समझ आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेट में भी आ चुका है, नहीं आया वो क्लियर, नहीं हुआ क्लियर, सो प्लीज आस्क हाउ 7 प्रोसेसेस आर क्रिएटेड। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. So now in exam you can be asked, even in theory exam you can be asked, because this is a portion of your inter-process communication। प्रोसेस में फॉर्क सिस्टम कॉल आएगा ही, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, कि भाई 4 times fork system call is called, then how many processes will be created? तो आप बोल दोगे 2 की पावर 4, ठीक है।
So, but you have to explain how. So you have to explain through this, like this diagram. इस तरह से tree structure, tree hierarchy आपको बना के explain करना पड़ेगा, right? So let us see now implement this program. So suppose bi space fork नाम का मैंने एक .c फाइल क्रिएट किया. Let's insert escape colon wq. Then यहाँ पे fork and fork dot c. वार्निंग आ रही है बिकॉज फॉर्क जो है इट इज अ कीवर्ड, so we should not use it, but for now ignore the warning. Dot to run it ./fork. Okay, so now here you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 times this hello is printed. Okay, now what is the predict the output of the following program? So such type of questions will be asked. कि program दिया है, you have to predict the output. Now in this program we have given the name as fork example. Now we are calling this fork system call and we are comparing if its value is negative, if its value is 0, or if its value is positive. So if its value is 0, it means the child is successfully created and we will print hello from child. Okay. And if its value is non-zero, it means that if its value is positive, okay, then we will print hello from parent. Okay. So now in the main, we are calling this function return 0. So now see, output can be like this also or like this also. Why? Because we don't know which process will run first. Parent can also run first, child can also run first. Okay? So if child is running first, यहाँ fork successfully create हो गया है, then child process is also created. And now if child process is running first, then it will print hello from child. Okay, and it will not print this else command. But now when the program is complete, किसका turn आया? Parent का turn आया. So what parent will do? Parent will print hello from parent. So this hello from parent is from parent and this hello from child is from child program. These two statements are from different processes. ऐसा नहीं है कि ये एक ही प्रोसेस से प्रिंट हो रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल ये एक सी का प्रोग्राम है और इसी प्रोग्राम में हेलो फ्रॉम चाइल्ड भी प्रिंट हो रहा है और इसी प्रोग्राम का हेलो फ्रॉम पेरेंट भी प्रिंट हो रहा है. नो, देयर आर टू डिफरेंट प्रोग्राम. एक पेरेंट का प्रोग्राम है एंड एक चाइल्ड का प्रोग्राम है. अगर पेरेंट के प्रोग्राम से हेलो डॉट पेरेंट प्रिंट होगा और चाइल्ड के प्रोग्राम से हेलो डॉट चाइल्ड हेलो फ्रॉम चाइल्ड प्रिंट होगा. राइट? क्लियर? Or if parent is running first, then hello from parent will be first statement, then hello from child. So this is from parent process and this is from child process. Okay, so in the above code, child process is created, fork returns 0 in the process and positive integer in the parent process. Two outputs are possible because parent and child are running concurrently. So we don't know whether OS will give control to the parent process first or to the child process first. Okay, important note, parent process and child process are running the same program, but it does not mean that they are identical. Like हमने starting में ऐसा बोला कि child is replica of parent or it is a copy of parent. Okay, we cannot say that both are identical because we can program child in any other way also. ठीक है? OS allocate different. Why we cannot say they are identical?
because operating system allocates different data and different states for these two processes, and the control flow of these processes can be also different. So both are sharing few resources, but both are not sharing few resources also. So both are not identical. हम ये नहीं कह सकते कि they are copy of each other. They may be copy of each other in this code, okay, but they are not sharing the data, they are not sharing the core, the memory, okay. So they are assigned different memory locations, okay. So they are not identical. Now they have their own identity, okay. Now predict the output of this program. Now ये program बनाया है. Now we have called this fork system call. If it is 0 means child has successfully created, and what we are doing, x में हमने 1 ले लिया है, so child is incrementing the value of x, and parent, what a parent is doing, parent is decrementing the value of x, okay. So if child will run first, then child क्या करेगा, x में 2 ले आएगा, and if parent will run, then it will decrement the value of x. And if parent is running first, then this statement will be first, x equal to 0, and child will print x equal to 2 next statement. Clear हो रहा है आप लोगों को what I am trying to convey about this parent and child processes? Yes or no? At least say yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, After ma'am. running this program, you have Yes, to ma'am. explain me how it is working, okay. एक बार मैंने तो explain कर दिया है, now you explain me. bi suppose fork example dot c, okay. Insert command insert key, then escape colon wq, then fork example space fork example dot c, okay, dot slash fork example. Hello from parent and hello from child. So first parent program is running and then child program is running, okay. Again let us try to implement it. Again this time parent. So generally पहले parent ही run होता है and then child run होता है, ठीक है, but sometimes child can also run first. Now हाँ बोलो. हाँ 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 हाँ. Yes. प्रोसेस आईडी देगा, हाँ. नहीं देखो ये प्रोग्राम क्या बोल रहा है, ये प्रोग्राम अलग चीज बोल रहा है. देखो जो प्रोसेस आईडी देगा ना वो रिटर्न करेगा प्रोसेस आईडी, दैट विल बी द प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड, ओके. अभी ये प्रोग्राम तो क्या कर रहा है कि ये प्रोग्राम क्या बोल रहा है, इफ फॉर्क इक्वल टू 0 मतलब चाइल्ड सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है. यहाँ इफ एल्स कंडीशन लगाइए सिंपल. अकॉर्डिंग टू दिस इफ एल्स कंडीशन, इफ फॉर्क इज 0 तो हम चाइल्ड के थ्रू ये कमांड प्रिंट करवा रहे हैं, ओके. एंड इफ फॉर्क में पॉजिटिव वैल्यू इज रिटर्न, इट मींस दैट वैल्यू इज द आईडी ऑफ चाइल्ड ओनली, बट हम पेरेंट के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं हेलो फ्रॉम पेरेंट. समझे? अरे हाँ ना तो बोलो, समझे कि नहीं समझे.
that positive value is the ID of child only, बट हम पेरेंट के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं ये स्टेटमेंट हेलो फ्रॉम पेरेंट, समझे? क्योंकि एल्स में कुछ तो कंडीशन देनी पड़ेगी ना. अब जो तुम बोल रहे हो ना वो भी हम करते हैं. नेक्स्ट वही आएगा, गेट पीआईडी एंड ऑल. नाउ what is the difference between fork versus exec? So in your practical list there is also this system called exec. So fork system call creates a new process. The new process is created by fork is the copy of the current process except for the return value. यानी कि जो return value होगी वो process ID होगा child का, and process ID of parent is different. The exec system call replaces the current process with the new program. So exec system call क्या करता है, current program, current running program को replace कर देता है with the new program. It does not create a new process, but it replaces the currently running process with the new process, other process. Okay, so ये replace करता है, it replaces, it does not create but it replaces. Okay. Now there are few, मैंने सेल्फ स्टडी के लिए दो तीन यहाँ पे तीन चार एग्जांपल्स रखे हैं, वो आपको करना है. Those are gate examples like this. A process executes the following code. The total number of child processes created is. So please tell me what should be the answer. 2 raised to n minus 1. Very good. Why -1? Because इसने पूछा है total number of child processes. अगर total number of processes पूछा होता तो what will be the answer? 2 raised to n. 2 raised power n, right? So इसी तरह से कुछ और codes भी हैं. Try to solve these questions. Okay. Now get PID and get PPID. What is that? So get PID will return the process ID or the ID of currently running process. Currently running process child भी हो सकता है और parent भी हो सकता है. But get PPID will return the process ID of parent of the calling process. यानी कि जिसने ये function call किया है, ठीक है, उसका parent का process ID return करेगा get PPID. Okay. Now, if the calling process was created by a fork function and the parent process still exists at the time of this function returns the process ID of parent process. But like मैंने आप लोगों को पहले बोला था, this function, if the parent, अगर parent terminate हो जाता है, suppose ये child है, इस child ने get PPID call किया, get PPID, okay? तो इसका जो पेरेंट है उसका आईडी रिटर्न होगा. ओके. बट इफ पेरेंट इज टर्मिनेटेड, अगर पेरेंट टर्मिनेट हो चुका है, सो दैट चाइल्ड विल बिकम ऑर्फन एंड इट विल बी अडॉप्टेड बाय इनिट प्रोसेस. ठीक है. एंड दिस इनिट प्रोसेस हैज आईडी 1. तो इन दैट केस जब गेट पीपीआईडी कॉल होगा तो 1 विल बी रिटर्न. ओके. So 1 will be returned for init process. Now let us see this program. हमने एक वेरिएबल लिया PID. PID में हमने fork कॉल किया है. If it is 0, it means that successfully create हो चुका है child. And what we are doing is parent process ID print करवाना है हमें. Cout parent process ID get PID and child process ID with parent ID is get PPID. Child, just a minute. Child process ID, child process with parent ID is get PPID output.
एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। लेट अस सी। गेट पीपीआईडी रिटर्न्स द प्रोसेस आईडी ऑफ पेरेंट ऑफ द करंटली रनिंग प्रोसेस। सो करंटली रनिंग प्रोसेस के पेरेंट का आईडी देगा गेट पीपीआईडी, ओके। एंड गेट पीआईडी returns the process ID of current process, right? There is some confusion. मुझे confusion हो रहा है इस प्रोग्राम में. Let us see another program. So PID और PPID नाम का हमने दो variables लिए of this data type, ठीक है? This is inbuilt data type in this library. Now get the process PID. So PID में हमने कॉल किया get PID. So get the parent of this process PID. Okay. Spelling of parent is गलत है यहाँ. I will correct it. Implement करके देखते हैं. Then we will हमें पता चलेगा, ओके। एंड पीपीआईडी में हमने कॉल किया है गेट पीपीआईडी। नाउ प्रिंटफ माय पीआईडी इज मींस दैट द प्रोग्राम व्हिच इज करंटली रनिंग, सो द प्रोग्राम व्हिच इज करंटली रनिंग हैज द आईडी इन पीआईडी, राइट? And my parent's process ID is in PPID, right? So get the process ID. You will get the process ID, current process ID from this get PID, and you will get the parent's ID from this get PPID. Okay, correct. So now let us implement this. So VI PID or ID.C. Just a minute. Hello. Now we want to run this program. This is in C. So let us see how to implement program in C++. Can you see this? JS Linux screen? Yes, ma'am. Now VIID.cpp, ठीक है? एक ID नाम की हमने create की file. Now I am copying this code. Okay, escape:\wq. अभी मुझे इसको रन करना है, तो id.cpp बस करना है. ओके, सक्सेसफुली हो चुका है अभी ये. ./id.
So my PID is 195, my parents PID is 47. तो मुझे ये प्रोग्राम में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है. नो, लेट अस लीव दिस प्रोग्राम बिकॉज यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस आईडी को बोल रहा है गेट पीपीआईडी एंड चाइल्ड में उल्टा कर दिया इसमें. So I will remove this, see this program. This is the correct one. So current process का ID पता करना हो तो that will be in get PID, okay? And उसके parent का ID पता करना हो तो that will be through get PPID. ठीक है. So मैंने ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, this C program, तो इस प्रोग्राम का जो ID आया है, okay, वो है 195. इस प्रोग्राम का जो आईडी आया है वो है 195 और इसका जो पेरेंट प्रोसेस है दैट इज 47. ठीक है. नाउ अगेन लेट्स रन दिस प्रोग्राम. सो माय पीआईडी इज 196 एंड पेरेंट्स पीआईडी इज 47. भाई क्यों अब क्यों 196 आया? और पेरेंट तो वही है पर जो प्रोसेस आईडी है, करंट प्रोसेस रनिंग आईडी, वो चेंज हो गया. Again, let us see implemented. Now again you will see process ID is changing 197, but parent ID is same. Yes. Yes. Can anyone of you guess? Yes, Vedant, can you guess? Can we say that a new process is created each time? क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा. A new process is created each time. I कैसे? 3 times कैसे? और थोड़ा तेज बोलो. Yes. Priyanshu. Yes, Priyanshu. Just a minute, I have a call. Hello. Process ID is changing, but parents' process ID is not changing. Om, can you please tell me? Yes, Om. So, are you all listening even? Yes. Okay. Thanks, Irfan. So others are not listening, right? Listen. तो जवाब तो दो. यस, नो, नहीं आता, नहीं समझ आया, जो कुछ तो बोलो. यस, राजीव. Yes, ma'am. My process ID is changing again and again, but not parent process ID. Maybe because we are running it again and again, so and time process ID is Okay. So when I am running this program, it is a process, some process. Okay. मैंने ये रन किया. ठीक है. अब ये इसका आंसर आ गया.
the current process is terminated. ओके, अगेन रन किया तो नया प्रोसेस जो है आईडी मिलेगा, नया प्रोसेस it is a new process which is executing this program. Again I am running it, so it is a new process now. ठीक है, so that's why नया आईडी आ रहा है, but parent of all these processes will be same. Okay, parent यहाँ पे same है सबका, but every time whenever we are running the new process is running this program actually. समझ आया? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, if we run this program a bunch of times we will see the output like this. So my process ID is this, parent ID is this. Again when we are running it, the process ID will be increased by 1 but parent ID will remain same. Again we will run it, so it will be increment by 1 the current process ID, but the parent process ID will remain same, 13790, 13790 and 13790. So every time parent process ID will be same, but when as many times we run this program, a new program is actually running this script. Okay. Now wait system call. So are you all clear with this program? Yes, ma'am. Okay. Now what is wait system call? Like मैंने आप लोगों को theory में भी बताया था, a call to wait blocks the calling process until one of its child process exists or signal is received. So actually, whenever the fork system call is called, parent will also call this wait system call. Why? Because parent want to know the termination status of the child. ठीक है, जैसे ही fork call हुआ, child create हुआ, ठीक है, and ये हम बाद में देखेंगे क्या है, and जब child exit कर जाएगा, at that time it will inform its status about its termination to the parent. एंड वो स्टेटस के बारे में तभी इन्फॉर्म करेगा अगर पेरेंट ने वेट सिस्टम कॉल किया होगा. नाउ व्हेन इट विल इन्फॉर्म अबाउट इट termination to the parent, then parent will resume its work. Okay, so after child terminate, parent continues its execution after wait system call instruction. So child process may terminate due to the following reasons. Either exit call हुआ है, function call हुआ है, या फिर it returns from main program से return हो चुका है, और it receives a signal whose default action is to terminate, यानी कि उसको forcefully terminate किया गया है, ठीक है, from operating system or any other process. So there can be any ways by which child process जो है यानी कि उसका execution खत्म हो चुका है, या तो exit system call हुआ है, या फिर forcefully उसको exit करवाया गया है. Whatever the reason is, it will give its status to the parent. Okay, and then parent will resume its process. Its execution. Okay. Now. वेट सिस्टम कॉल का ये सिंटैक्स है. दिस इज द वेट सिस्टम कॉल. सो इट टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट स्टेटस एंड रिटर्न्स अ प्रोसेस आईडी ऑफ द डेड चिल्ड्रन. सो डेड चिल्ड्रन का जो प्रोसेस आईडी है वो रिटर्न करेगा. ठीक है, दिस वेट सिस्टम कॉल विल रिटर्न द प्रोसेस आईडी ऑफ द डेड चिल्ड्रन. ओके, नाउ लेट अस सी दिस प्रोग्राम. तो हमने एक वेरिएबल लिया है ऑफ दिस डेटा टाइप, PID underscore t is a data type. Now we are calling this fork system call. If it is 0, it means child is successfully created. But in the next statement, we are forcefully terminating the child by calling this exit function. Okay, यहाँ create हुआ है, यहाँ हम उसको terminate कर रहे हैं. Else what we will do is we will take the ID, okay, of child
by calling this wait system call. ठीक है. Now printf parent id is get pid and child id is cpid. So जो dead child था, dead child का id इस cpid में आएगा and वो हम यहाँ print कर रहे हैं. ओके. एंड जो पेरेंट है जो कि करंटली रनिंग है उसका आईडी हम गेट पीआईडी से ले रहे हैं यहाँ पे. ओके, क्लियर? So let us execute this program. I hope आप लोगों को प्रोग्राम समझ आया है. Is this program clear? Vi and then wait example. At least say yes or no. Yes, ma'am. So this is the program. Okay, dot C है. C था ये. Compile. Then run. Parent ID is 246 and जो dead child 245 sorry and जो dead child है उसका ID है 246. Okay. Now this is another example of wait system call. क्या है यहाँ पे? For कॉल हुआ, if it is 0 यानी कि child successfully create हो गया है, we will print hello from child. Else we will print hello from parent. Parent will call this wait system call and it will print what? Child has terminated. And यहाँ पे जब if end हुआ, if block, then printf by. So this by will be used by both parent and child. Okay. Because it is the instruction of the main program. Now output. Suppose depend on the environment. If child is running first, then child will print hello from child and bye. Now parent का turn आया, so it will print hello from parent and child has terminated. ठीक है? और दूसरा एग्जाम्पल, अरे दूसरा क्या हो सकता है? अगर पेरेंट पहले रन हुआ देन इट विल प्रिंट हेलो फ्रॉम पेरेंट. ओके. नाउ हेलो फ्रॉम चाइल्ड बाय चाइल्ड हैज टर्मिनेटेड एंड देन बाय. तो ये कुछ समझा सकते हो मुझे कैसे आउटपुट आया? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट इज रनिंग. ठीक है, यहाँ पे क्या था? चाइल्ड इज रनिंग. तो चाइल्ड ने हेलो फ्रॉम चाइल्ड लिखा, बाय किया और एग्जिट हो गया. इट मींस चाइल्ड हैज टर्मिनेटेड. चाइल्ड का फंक्शन ओवर हो चुका है. नाउ पेरेंट इज एग्जीक्यूटिंग. सो पेरेंट इज राइटिंग हेलो फ्रॉम पेरेंट. चाइल्ड ने अपना टर्मिनेशन स्टेटस पेरेंट को दे दिया है. सो नाउ पेरेंट विल वर्क. So parent is now printing hello from parent and it is writing that child has terminated. But in the second case, first of all parent is running. So child जो है वो terminate नहीं हुआ है अभी. Child का termination का status parent को नहीं मिला है अभी, right? जब parent को termination status मिलेगा, then and then only it can print this command. Child has terminated. तो हेलो फ्रॉम पेरेंट प्रिंट होने के बाद वेट सिस्टम कॉल जब कॉल हुआ, सो नाउ द पेरेंट इज वेटिंग फॉर द चाइल्ड टू टर्मिनेट. तो चाइल्ड रन होगा अब
So child will print hello from child and then by. अब जब child terminate हो चुका है, now the parent will print child has terminated and then by. I hope आप लोगों को clear हुआ हो. Is it clear? Yes, ma'am. So let us execute this program. Vi wait example2.c. Escape colon wq. Okay. Now so parent ID because parent okay sorry पुराना ही कॉपी हो गया है. This was our main program, right? Let us change the program. Escape colon wq. Run. Sorry, compile and then run. So hello from parent. So parent is executing first. Then hello from child. Child ने buy किया. ठीक है. Now parent is writing that child has terminated and finally buy. Okay. Now last आज हम EXEC तक देखते हैं. What is EXEC? और खत्म करें यहाँ पे. You tell me, is this enough for today? Because you have to implement this, run it and implement this today only. So next time जितना हुआ है आप करके लेके आओ. Please let me know if we can stop here और आगे अभी we can continue for EXEC command. Hello. At least say you want to continue or you want to stop here. Stop here, ma'am. Okay. Stop here. Okay. So try to run all these programs. EXEC हम next time करेंगे. So आज आप लोग fork, wait system call, fork and then get PID and get PPID. ठीक है, इतना देख लो. Try to run all these programs. If you have any doubt, you can ask me then. Okay, you can work offline now. So you can leave now. Thank you, ma'am.